जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने बहुत ही एक अजीज दोस्त के साथ अभी गुफ्तगू में होऊंगा भाई, जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर से फौजी वेटरन्स के लिए। अभी हाल ही में इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कॉमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया है विद एन एप्रिसिएशन लेटर एज वेल। बहुत सराहना हुई है और ये कल हुआ है। And he is an inspiration for a lot of veterans to emulate him and to see the good work that he's doing and learn from him. He is my dear course mate. We both are from Short Service Commission 76 OTA, and that is why I'm even more proud. But सोचिए दोस्तों, फौज की वर्दी टांग देने के बाद आपका काम टॉप ब्रास सराहती है, आपको कॉमेंडेशन कार्ड से नवाजती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसको अगर मेरे से निजी तौर पे पूछें तो मैं इसको कोई पद्मश्री पद्म भूषण से कम नहीं मानता हूं। आइए बात करते हैं मेजर सौरभ शर्मा से, जो कि बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। सौरभ, जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम ब्रदर। Yeah, thanks, Ali. Thank you very much. And it is old memories, academy days, definitely 20, 23, 24 years old memories. It is just coming in front of me. So it's good and that you are there. And what I say, it is just normal. I say that yes, the things which we are doing, and that is a good part. That apart from my daily, I say the bread and butter, and I owe many things to the forces, which is very dear and very near to me and near to my heart. So with that, I say ki, once a Fauji is always a Fauji. So with that, I just try a little bit to do something for the forces, because initial my 5 years, I learned a lot, many things. Whatever I learned, whatever I am right now, it is because I say the foundation is being developed and built by the forces. So उसी को थोड़ा सा we are trying, or I am trying since long, to slowly doing something for the Fauji's veterans, and this is a way by which I can do little bit for them. And because I am from Mahu is a cantonment area. Mahu is I say the most important military station. If we talk about the Indian Army, there are great three institutions here: Army War College, MCT, Military College of Telecommunication Engineering, which is for the cyber warfare, and the Infantry School. These are the good institutes. Officers keep coming there, Sorry, and so with that, yes, the lot things, the opportunities are coming, and I'm doing for that. So thanks. Just I say thanks to you that you have given the opportunity to explain that what else we can do for the veterans and the forces. Yali. right. I'm so sorry. Yeah, I am so sorry about the bad network. I think कुछ network glitch हो रहा है. And let me tell you, Saurabh was always a very is tribute to every tries to at least प्रयास उनका वो रहता है. And मैं इनकी and I'll say, yeah, this is some dedication. Always, sir. And sorry, ये network खराब हो रहा है. I'm माफी चाहूंगा. Yeah, network बीच में Ali, just repeat what you said. थोड़ा सा network का issue रहा है. Please repeat that. Yeah. Yeah, Saurabh, can you hear me, bhai? Yeah, now it's audible. Now it's audible. Yeah. Okay. I apologize to my viewers for the bad network. And yeah,
So Saurabh, so could you tell us about, throw some light about the work that you do for the veterans, for our viewers to know? I though am well aware of it, and I really commend you for that. And I truly appreciate and respect what you're doing. It's amazing. कोई आप दर्शकों को बताएंगे आप थोड़ा अपने काम के बारे में? Yes, so Ali, what I say that Abhi, basically it started in 2008, and when I have done my MA in psychology, so I have a great interest in psychology. So uske baad I started guiding the students around the Mahu area, and approximately I say 80-90 students are there in the forces. Some of them they are in the they are fighter pilots, some of them they are in the they are naval pilots, and some of them they are in the bark and the other scientific institutes, so they are there. And it started from there, and then slowly those officers, they are right now, recently I say that it is close to 10 years now. Some of them they are in the short service, now they are just moving out towards the corporate world. So again, it started in 2020 when they were moving out, and then they need some guidance. So we started a transitioning program also. So corporate transitioning mentoring we started, and because I am Indore is here, and in last 3 to 4 years, approximately 50 or 55 students, or I say the officers, have been mentored by us, and we have given them the avenues by which they can explore the corporate world. And more importantly, that in the corporate, if we see that most of the things an officer do in the forces, but they don't know the terminology of that which is being used in the corporate world, that the work is same in the corporate and work is same in the forces also, only the difference is the terminology. So we generally guide them that how to make their interviews effective, how to negotiate for the good industry, and how to prepare the resume, what is expected out of them when a corporate world is trying to get a veteran, what is the expectation of the corporate world. So with that we started, because in last I say I was in the HR, I was in the technology vertical. I developed the electric vehicle, I was in charge of the innovation, so I was able to understand that what is the corporate demanding. And with that understanding, I started guiding my old students, to whom I guided 10 years back when they were preparing for the forces. Now it is 10 years, now they again they again asked me that, okay, now again guide us for the corporate. So we started that. Apart from that, I say the more importantly, the our jawans, and specifically if I talk about the, I was able to give job to quite good number of the jawans and the JCOs and veterans from the AME, because my domain area was in the automobile. So I got so many requests from the EME of the EME electromechanical, and from there we have taken some of the GCOs and HMTs, and then the technicians, and they are in the work. They are working in the automobile. So that is one thing. And the skill development, of course, we are working on the skill development. Recently, we have taken a project to develop the skills for the Agniveers, because in next, I say next 3 years, in 2027, there will be approximately 30 to 35,000 Agniveers would be coming out. Right now, there are approximately 1 lakh Agniveers in the forces. 70,000 are deployed. They are in the field, and 30,000 they are under training. So they would be coming out in 2027, and nobody is right now thinking that where they will be going, what the job enrichment, job enhancement, skill enhancement is required. So we started working on that, started working with the regular ex-servicemen, but soon we'll be developing some modules so that these Agniveers, when they come out, they will have a good training, because 4 years is good training. They are very energetic and very trained and very disciplined soldiers. And if they Hmm. can be given some exposure about the corporate world, definitely they'll be going to add a good human capital towards the growth of the nation. So with that understanding, we are working. And the minor issues of we say that the issues with the widows, veer naris, about the pensions and their settlements, and some local issues, we are supporting them also. And the most important part, we are giving the we are ensuring that the last rites, रिस्पेक्टेबल अंतिम संस्कार, जो भी फौजी इस एरिया के आसपास होते हैं, इंदौर के आसपास, एमपी में जितने फौजी इसके आसपास होते हैं,
वी आर ट्राइंग कि दे शुड गेट अ गुड ऑनरेबल लास्ट राइट्स, उनके अंतिम संस्कार में उनको पूरे सम्मान के साथ उनका रीतनेइंग हो, उनको प्रॉपर एक जिसको हम कहते हैं कि सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो, तो ये भी हम इंश्योर करते हैं। So these are the 4 5 areas. Apart from that, abhi, we are trying to get some of the soldiers because we have a drone company, drone vertical, hai, where we give the pilot services to the projects. So we are trying to develop the airmen for as a drone pilot, which is being licensed by the DGCA. So that is a new venture which we are trying to get in. So these are the 4 5 verticals we are doing, Ali. Impressive and indeed very inspiring. In the meantime, let me take this opportunity to tell our course mates in the course group to join the conversation. Um, yeah. Yes, Saurabh, can you hear me? Yeah, you're audible, Ali. You're audible. I'm telling in the course group for people to join. एक Yeah, minute, definitely. guys. Please join. Join. Okay, लिख दिया. अच्छा, now tell me one thing. Saurabh, ये about how for other veterans in that area, they would be really I'm very envious of you. Not jealous but envious. That yeah, Saurabh, good यार, he's been recognized by the chief and good guy ये वो. So उन veterans को आप क्या सलाह देंगे एक अपनी तरफ से? Say, ऐसा है, but yes, it can be, it is, but I see that when it is in your nature, it is in your behavior, it is coming out, then I think people might think, because I remember whenever I meet any veteran here, maybe a soldier, maybe a officer, maybe a general, I say that if he is elder than me, definitely I ask कि आपके blessings हैं, with your blessings I am here and I seek your blessings. So always I say to seniors also. So I think to some extent they get, they don't feel like that ki, okay, anxious or jealous or whatever I say, that it is because it is up to us that if you have been given the opportunity. I say that this all opportunities are being given by the God, एंड भगवान ने आपको ऐसे मौके दिए हैं कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो विद दैट दी इट कम्स दी हम्बलनेस that it is not me which I am doing, because it is the circumstances which is being provided by the God, and that's why this all जो परिस्थिति ऐसी बनती है कि सारे काम हो जाते हैं एंड अच्छे से हो जाते हैं, एंड इट इज नॉट taxing on me on my regular business. It is not taxing on that also, and I'm able to do that. So I say that it is not because of me, because my business is running and still it is happening, so it is happening because of something else. So with that understanding, I generally greet all the veterans, all the seniors, all the soldiers retired, and I give that due respect. तो उसके बाद ऐसा रहता है कि शायद उनके मन में आता भी हो, तो with that understanding वो इतना ज़्यादा effective नहीं रहता है, वो सोचते कि चलो ठीक है. When you give respect to somebody else, definitely they think कि okay. So that is there, Ali. Amazing. I've got to learn that. That's very, very nice of you, Saurabh. That's very, very nice of you. And could you throw some light on the business that you are doing? I mean, दर्शकों को भी मालूम पड़े about the business that you do, Saurabh. Yeah. So right now, I say the vision is something a bit different. I say started from the forces, because it is something different from the forces. But to just add, I am planning that in within 1.5 or 2 years, I'll be moving to a different area, different tangent, because I say that it's good. 46 is a good age that you can. You have done good for the family. You have done good something for yourself, and now it is time that you move somewhere else. And it is, I say that generally I don't come on the social media. I don't speak to social media because I was restricting myself for next 1.5 years. Then I'll be coming out and I'll be uh, interacting more, and I'll be full-fledged going. So I think because you are my dear brother and my friend and course mate, so I thought, yes, now I can't say no to the course mates. And otherwise there are a lot many people ask me that, okay, come for this, come for this award, come for this speaker. I say wait for 1.5 or 2 years, because I still in the journey of learning.
And when I learned everything, then I'll come after 1.5 year or 2 years. So that is there. But still, one thing which I say that the addiction is one part which we are working very, very deeply. We are working. We have done very great research, deep research. I'm a trained psychologist for the addiction awareness among youth. So, and just to share that yesterday also with chief also, I discussed, and only thing on which I asked his support, that is only that we want to implement that addiction awareness programs all over the forces in all the units and all the APS, Army Public School. And he discussed in detail that okay, what you need to do, what you want to do. And just again, not to I say not to just show off that it is happening, but 2 months back, when I was with Honorable Raksha Mantri, Mr. Rajnath Singh also, to him also I requested, sir, that this is something which Yeah, we we saw should that. I work mean, on. Raksha Mantri had come to Mau. Yeah, so on 29th of December, we discussed, and again, that time also my humble request to Honorable Raksha Mantri was this, that okay, we want that the forces and the serving officers are the at very high respect by all the Indians, and they should be utilized to give an example to present youth that why you should not be indulged in something which is addictive, maybe social media, maybe mobile, maybe drugs or something else, whatever is forcing you to do uh, against the normal, against the normal things, then it is addiction. So we tried, and we are started working, and approximately 1250 students we have connected directly. Lot many students they left the this drugs and the addiction, social media addiction or the mobile addiction. So we are working very deeply for that, and we filed one PIL also. In fact, two PIL we have filed in the High Court of Indore. And one PIL is that the student should not be given. There should be a limit of the data for the students up to the age of 18 years. There should be a limit that 1 GB data should be, it should be rationed, right? So that we have put in there in the High Court of Indore. And that is one part, is a different thing, that it is mostly related to the stress among the students. So one PIL is related to the coaching institute, that they should not be publishing the photographs and names of the students who top NEET or JE or other things, because it creates the uh, what you suggested, the anxiousness among the other parents, and then other parents start scolding and pressurizing the their children, that see uske bacche ka ho gaya, uske bacche ka photo aaya, tumhara to kuch hoga nahi. All these things happen, and it creates the Hmm. stress among the children. And agar main I keep taking the photographs every day, अगर आपको न्यूज़पेपर में 3 सुसाइड केस ना मिले, तो आई थिंक उस डेट को आप नोट कर लेना कि कल का दिन अच्छा था, बिकॉज आज 3 से कम सुसाइड हुए हैं. सो एवरी डे यू सी दैट 3 people आर डूइंग द सुसाइड. So that is one thing. And I see that every morning when I got up, मेरा एक ही काम, दो काम मेरे कभी नहीं छूटे पिछले 10 साल में. The moment I get up, सबसे पहला काम होता है मैं आंख बंद करता हूँ और अपने आप, मतलब मैं पूछता हूँ कि काफी सारे लोग जो हैं वो आज कल रात में सोए थे पर आज सुबह उठे नहीं है, और मैं उठ गया हूँ, तो मुझे भगवान ने क्यों उठाया है? तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि आज मुझे उठा दिया गया है, थैंक यू, बट मैं क्यों उठा दिया गया हूँ? ऐसा क्या काम बहुत ज़रूरी था, जो भगवान ने ये बोला कि नहीं तुम करोगे ये काम, इसलिए तुम्हें उठाया जाता है, बाकी सब तो सोते रहेंगे? तो आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ एवरी मॉर्निंग. दैट मीन्स 10 ईयर्स में मेरा ये रूटीन कभी नहीं टूटा है. पीपल जनरली मोबाइल उठा लेते हैं, पहले मैं भी उठाता, बट नाउ ऐसा है कि उठता हूँ सबसे पहले पिलो पीछे लगाता हूँ, आई सिट फॉर 2 मिनट्स एंड देन आई आस्क द क्वेश्चन कि आज क्यों उठा दिया मुझे, आज क्या ऐसा था मेरे लिए. एंड देन रात में मेरा एक रिचुअल और है, रात में सोने के पहले आई जस्ट पुट माय फिंगर्स लाइक दिस, एंड देन आई अगेन आस्क कि जिसके लिए सुबह उठाया था उसका मैं कितना परसेंट कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ, या जीरो करा हूँ, कुछ नहीं करा हूँ. देन आई आस्क क्वेश्चन इन द नाइट. सो दैट इज माय रूटीन, एंड आई थिंक इससे ही शायद मुझे एक बूस्ट मिलता है कि ठीक है कुछ करो, सुबह तो सोचा था बहुत कुछ, शाम होते होते क्या हुआ. So that is, I say that the vision is that the addiction awareness and the stress management among the students. This is the, I say, is the vision Yeah, for me. So that is there, Ali. lovely. Saurabh, I am so happy to be in this conversation with you. And Saurabh, I know the network issue is, and but जाते
सौरभ, या नाउ Yeah, यू कैन हियर मी। बट yeah. जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कोई जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कोई आखिरी संदेश आपकी तरफ से सौरभ? एक ऐसे ओनली एक संदेश, एक मैसेज मैं देना चाहूंगा कि एनीबडी हु इज स्ट्रगलिंग कैन इन यू द हियर मी? लाइफ, yeah, anybody who's struggling, or I say not struggling, finding it difficult, कुछ भी एक छोटा सा भी अगर माइंड में कुछ आता है तो आई जस्ट से कि यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज इट इज बीइंग, मेरे पास कॉन्टैक्ट आते रहते हैं, यंग स्टूडेंट्स के, एजेड लोगों के भी आते हैं। एनी टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ नहीं है, डिप्रेस है या फिर बुरा लग रहा है या सैड है, तो दे कैन कॉल मी। बट एक वो है, एंड देन अगेन बिकॉज हमारे कोर्समेट काफी सारे हैं, तो मेरा उनसे एक थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट है कि कहीं पर भी ऐसा है तो इफ दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस मिशन, एंड दैट इज द एडिक्शन अवेयरनेस, सो आई एम टेकिंग इट ऑन अ वेरी लार्जर स्केल। सो मैं सपोर्ट ये चाहूंगा कि बिकॉज हम सभी जो फौजी हैं उनको सब रोल मॉडल मानते हैं, तो अपने अपने शहर के आसपास वो जहाँ पर भी इस तरह से चीज़ें कुछ कर सकते हैं तो वो करें। और सेकंड ये कि जनरली 2020 से लेकर 25 5 साल में हमने, मतलब हमारी टीम है 20-25 लोगों की, हमने सीखा है कि हम कहते हैं कि पुलिस मिली हुई है ड्रग पैडलर्स के साथ में, ड्रग पैडलर मिले हुए हैं, प्रशासन को पैसा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन। मैं सबसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि बच्चे जो हैं वो बच्चे पुलिस के नहीं है, बच्चे प्रशासन के नहीं है, बच्चे मेरे और आपके हैं। तो जब मेरे और आपके बच्चे हैं तो हम पुलिस की तरफ और प्रशासन की तरफ इस तरफ क्यों जाएं? इट्स बेटर कि हम हमारे बच्चों को इतने स्ट्रांग बना दें कि उनके सामने ड्रग्स 24 घंटे पड़ा रहे, और पड़े रहने दो, घर के अंदर पड़ा रहे, बट उनको इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उनको उसकी तरफ ध्यान ही ना रहे। सो मेरा सिर्फ यही कि जितने मेरे अपने कोर्समेट हैं उनसे ही कि अपने घर के आसपास जहाँ भी ऐसा दिखता है तो दे कैन talk to the students, they can give them the avenues to play, enjoy, खेल कूद करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, आर्ट कल्चर, खेल कूद कुछ भी करेंगे, डेफिनेटली दे विल बी एंगेज मेंटली एंड फिजिकली। खेलना कूदना चलता रहेगा तो उनका माइंड उस तरफ नहीं जाएगा। तो फर्स्ट इज दैट कि उनसे बात हो जाए, एंड सेकंड कि किसी तरह से आसपास अपने ऐसे एवेन्यूज बनाए कि बच्चे किसी एक्टिविटी में और मेंटली कहीं एंगेज रहेंगे तो ये ना हो। तो बस एक ये रिक्वेस्ट है कि वो उसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे अली तुम्हारे घर के आसपास का बच्चा है अगर, तो वो तुमको देख के ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा। कोई बड़े से बड़ा, मैं इनफैक्ट ये भी कहूँगा कि मोदी जी से इतना इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो डिप्रेस होगा, उसको ऐसा कुछ लगेगा, वो ड्रग्स की तरफ जा रहा होगा, या उसको ऐसा लग रहा हो कि आज तो मैं कुछ कर ही दूंगा उल्टा सीधा, उस समय अगर तुम दिख जाओगे उसको, मैं कहता हूँ कि पेट्रोल पंप पे तुम पेट्रोल डरा है वो दिख जाएगा और तुम्हें देखेगा तो उसे लगेगा कि नहीं, ये सर मिले थे मुझे, इनने मुझे बताया था कि यार लाइफ में इतनी परेशानी, तो इनको देख के वो तुम्हें देख के ज्यादा मोटिवेट होगा। वो मोदी जी अगर उस समय वीडियो पे चलेंगे, मोदी जी को उसको ध्यान भी नहीं आएगा उन्होंने क्या बोला है। तो क्या होता है, जो हमारे आसपास है उनसे हम ज्यादा मोटिवेशन ले पाते हैं। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट करते हैं, कहीं जाते हैं तो हम वहाँ के लोकल किसी एक इंस्पिरेशनल व्यक्ति को लेते हैं और उससे बोलते हैं कि अब आप इसको करो, हम पीछे रहेंगे, हम नहीं करेंगे, बिकॉज हमें कभी देख नहीं पाएगा, हम तो 200 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। ये आपको रोज दिखेगा, ये रोज आपको कहीं मिलेगा, कहीं ग्राउंड में मिल जाएगा, कहीं रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा, पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा, किसी फूड कोर्ट के पास में मिल जाएगा। तो वो वहां पे आपको देख के एक बार एकदम से हो जाएगा कि नहीं, मुझे हिम्मत रखनी है, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है, तो कोई अंकल ने मुझे बताया था या मुझे सर ने बताया था। सो आई रिक्वेस्ट, जो संदेश था वो यही था कि अपने आसपास इस जो चैलेंज को हम समझें। और मुझे लगता है कि हमारे सारे कोर्समेट जो हैं दे आर टचिंग 43, 44, 45, 46, सभी के बच्चे उस एज में हैं जिस समय ये चीज बहुत ज्यादा रहती है, एडोलेसेंट एज रहता है, और उस समय उनको आसपास के एनवायरनमेंट में ये चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है। हमने एक रिसर्च स्टडी करी थी, एंड नाउ इट इज कमिंग दैट जो वॉट एवर इज हैपनिंग इन दी यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए में जो हो रहा है, इट इज कमिंग टू अस। नेक्स्ट 8 to 10 years में दिस ड्रग्स वाला सारे बच्चों के पास आ जाएगा, सारी चीजें रहेंगी। सो इट्स बेटर कि वी प्रिपेयर इन एडवांस। जैसे मैंने कहा अग्निवीर 2027 में आएगा, बट वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग 2 years बैक, 1 year बैक हमने स्टार्ट कर दिया। दिस इज अगेन ऐसे कि 8 years के बाद ये सिचुएशन यूएसए वाली हमारी आएगी कि हमें लोग ऐसे मिलेंगे बैठे हुए, दे आर फ्रॉम द गुड फैमिलीज, बट वो कहीं ना कहीं इस तरह से उलझे होंगे। इट्स बेटर कि हम प्रिपेयर कर लें, एंड वी स्टार्ट विद आवरसेल्फ, हमारे कोर्स ग्रुप से ही करेंगे तो आई थिंक इट इज बेटर। सो दिस इज दी, आई से दैट रिक्वेस्ट एंड मैसेज ऑल्सो, दोनों चीजें हैं। वेरी वेल सेड बाय यू, बिल्कुल। और एज इट शुड बिगिन फ्रॉम अस, एंड मोस्ट सर्टनली हमारे कोर्स में पूरे मिड 40s में ही है, एंड यू नो जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी, दे वुड बी इन देयर टीनेज इयर्स एंड दे वुड बी एग्जैक्टली, यस। in that experimental stage.
तो बिल्कुल सही बोला है आपने, सही फरमाया है। इस पे एक शेर याद आता है, मजरू सुल्तानपुरी ने भी खूब कहा था, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सौरभ, थैंक यू वेरी मच, इट वाज इंडीड अ प्लेजर, और बड़ा मजा आया भाई, बड़ा मजा आया आपका गुफ्तगू में। शुक्रिया वक्त निकालने के लिए भाई। जय हिंद ब्रदर। जय हिंद अली भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद भाई। जय हिंद अली भाई, जय। Just ending the live stream.